Good morning everyone. We are doing the investment multiplier chapter and today we have to start a test knowledge of the numericals. Let's start with it. So dear ones, test your knowledge. Let us see the questions one by one. If the value of MPS is 0.2, what will be the value of the multiplier? We know that multiplier and MPS are related. Multiplier का formula क्या होता है? 1 upon MPS. So by putting the value of MPS, we can easily calculate multiplier. Put the value 1 upon 0.2, it will be 5 times. Let us see another question. If the value of MPC is 0.9, 0.9 means here we are talking about 0.9. Then the value of multiplier. So for this we can use the formula K is equals to K upon 1 upon 1 minus MPC. K is equals to 1 upon 1 minus MPC. So by putting the formula and by putting the values in the formula, it will be very easy for us to calculate multiplier. This will become 1 upon 1 में से 0.9 जाएगा, 0.1 बच जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लग जाएगा, तो आंसर will be 10. 10 means it is 10 times. So let us start with the next problem. In an economy, the equilibrium level of income is 12,000. So what is given here? Equilibrium level of income means Y is given to you 12,000. The ratio of MPC and MPS is 3:1. It is the ratio. MPC 3 और MPS 1 नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों मिला के 1 होता है. 3:1 का मतलब 1 का थर्ड पार्ट जो है ये होगा, 1 का फोर्थ पार्ट जो है ये होगा. दैट मीन्स इट इज़ MPC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4, MPS हो जाएगा 1/4. दैट मीन्स 0.75 एंड 0.25 और इन दोनों का जो टोटल क्या बन जाएगा 1. दैट मीन्स MPC इज 0.75, MPS इज 0.25. So this is given in this form. So you have to just understand it, how they have given, and we have to find it out. What has been asked? Calculate additional investment. Additional means change. Investment to reach a new equilibrium level of income of rupees 20,000 crores. अगर हमें नई इक्विलिब्रियम चाहिए 20,000 का, तो ये भी चेंज नहीं बताया इन्होंने. चेंज क्या हो जाएगा? यू कैन सी दैट पुरानी इनकम 12,000 की है, नई इनकम 20,000 की है, तो ऑब्वियसली चेंज इन इनकम कितना आ जाएगा? 8,000 का. कितना हम चेंज करना चाह रहे हैं? 8,000 का चेंज करने के लिए हमें कितने इन्वेस्टमेंट में चेंज करना पड़ेगा? तो लेट अस सी द सॉल्यूशन नाउ. के का फॉर्मूला क्या है? 1 upon 1 माइनस MPC. अब 1 माइनस MPC क्या है? MPC मैंने आपको बता दिया, थर्ड पार्ट इज MPC, तो MPC 0.75. तो यहाँ पे K हमारा आ गया 4. दिस इज ऑल्सो बीन एक्सप्लेन्ड हियर. MPC और MPS कैसे आया? K हमारा आ गया 4. नाउ अगेन पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ K, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. K is 4, we have calculated here using MPC, and delta Y is 8,000. I told you how change in Y will be calculated. Y1 is 12,000, Y2 is 20,000. तो चेंज कितना आया? कितना एडिशन हुआ? 12,000 20,000 हुआ. तो चेंज इज 8,000 which has been given. Although they have not given it directly, but they have given two incomes, right? So what we have to do is we have to find out the change Y2 minus Y1. So it is 8,000 and delta I has been asked from us. Delta I is the question. So it is 2,000. Required investment. How does it come 2,000? We will cross multiply. Delta I is equals to 8,000 upon 4. तो 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे to 8,000 को, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2,000. I hope this question is clear to you. Let's go forward with the next question. In an economy, actual level of income is rupees 500 crores. That means they have given Y rupees 500 crores, whereas the full employment level of income is 800. ये एक्चुअल हो गई जो हम लोगों ने बाद में चेक की. अब प्लान्ड वाली कितनी थी फुल एम्प्लॉयमेंट पे? 800 करोड़. तो आप ये देख सकते हो कि इनकम जो हमारी हम लोगों ने डिसाइड की थी वो 800 थी, लेकिन हो गई कितनी? 500. द MPC इज 0.75. कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम. डेल्टा आई हमें बताओ कितना हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं कि हमारी जो इनकम है रिक्वायर्ड तक पहुंच जाए. हमारी प्लान थी 800 की, हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट एक्चुअली हम लोगों ने कर दी, जो हम लोगों ने बाद में चेक की, 500. हमें इतना पहुंचने के लिए हम कितनी इन्वेस्टमेंट अपनी इकोनॉमी के अंदर करें.
So that means this is y and this is y1, or you can say this is y1 or this is y2. We have to reach here. Now change in y we need is कितना हमें चेंज करना है, हमें 300 का चेंज करना है, 300 करोड़ का. So change in y is given 300 crores. Change in I has been asked. MPC is given to you. Again we'll put the formula of MPC. We'll find K here. K is 4. Now by putting the value of delta y, change in y and K. Change in y is 300. I have explained you how this 300 came. Delta I, so required investment is 75. Alright, because we'll put delta I this side, and 300 divided by 4, it will be 75. I hope this is clear to you. And this is test your knowledge. These are some questions which you have to do in your notebooks, and if you face any problem you can ask me anytime, dear ones. You can note down these questions from this video. Thank you. God bless you all.